हे गाइस, माय नेम इज़ राज एंड इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि जनरली रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेस ओनर्स को। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं जो कि ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकता है। अक्सर मैंने देखा है पिछले 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस में कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो ज़्यादा टेक सेवी नहीं होते हैं और वो जानते नहीं हैं कि उनके बिज़नेस को किस तरह के आईटी सोल्यूशन की ज़रूरत होगी, किस तरह के मार्केटिंग सोल्यूशन की ज़रूरत होगी। कई बार वो एक सिंपल सी वेबसाइट बनवा लेते हैं एंड दे थिंक दैट उनका काम हो गया, बट दे डोंट गेट द बिजनेस। समटाइम्स दे रन ऑनलाइन मार्केटिंग के कुछ कैंपेन्स एंड दे थिंक कि उनका काम हो गया, बट दे डोंट गेट रिजल्ट्स। सो अल्टीमेटली ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रीलांसर्स या फिर कुछ कंपनीज उन कंज्यूमर्स को सर्व करती हैं उनके मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, वो सही तरह से उन क्लाइंट्स को गाइड नहीं करती। अगर आपने भी ऐसी कभी सर्विस ली हो जो आपको सही तरह से गाइड ना कर पाई हो, वहाँ आपके पैसे गए हों और अगर आपके पास सही रिजल्ट्स ना आए हों, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को तो जानते हैं लेकिन टेक्निकल टर्म्स को नहीं जानते हैं और ऐसी सर्विस को ले बैठते हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती। अगर हम बात करते हैं वेबसाइट की, तो सही वेबसाइट नहीं मिल पाती। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की, तो सही तरह से मार्केटिंग कैंपेन्स रन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स या बहुत सारी कंपनीज आपको वो सोल्यूशन बेचती हैं जो वो बेचना चाहती हैं, ना कि वो सोल्यूशन जो आपके बिजनेस को एक्चुअली में हाइट्स पर लेके जा सकता है। तो ये जो नॉलेज सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद दिस वीडियो, दिस वुड बी ऑल अबाउट giving you kind of a knowledge which is fundamental knowledge about online marketing, about online business, and with this knowledge you would be able to judge better, you would be able to select better, and you will be able to invest in a better way so that you can get more and more return on investment. So chalte hain mere screen par, let me explain what all I'm going to talk about so that you will be judging whether this video series is for you or not. So here on my screen, if you see, I have divided the course, which is Digital Ecosystem for Online Businesses, into 7 modules. And if I explain what all is covered under those 7 modules, so these are the topics which I'm going to cover. I'm going to talk about the websites, I'm going to talk about the domain and web hosting, I'm going to talk about the communication, I'll be talking about the organic reach, I'll be talking about the online promotion, email marketing and payments. So अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको अभी typical लग रही है, do not worry because I'll be explaining them one by one. That's the whole reason for making these kind of videos for you. So today is the first day, so more or less I'll be talking about the websites, because we all know that to run a successful business, to reach in more and more people, to reach more and more audience, we need a website. We need a platform wherein people can come and know more about our offerings. So website is a must. Now जब हम बात करते हैं वेबसाइट की, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो आपको एक वेबसाइट तो बनाकर दे देंगे, लेकिन वेबसाइट आपके काम आएगी नहीं आएगी, ये सोचने वाली बात है। So in this video, I'm going to talk about the websites. We all know that for a business, we have to have a website. Now, what kind of a website you can have? Let's discuss about that. We all know that to run a business, to have a business website, we have to have a certain things on our website. If we are serving with services, then it should talk about the services. If we are dealing into products, it should talk about the products we are dealing into. There should be an e-commerce functionality on the website when people can come and buy the product also, or maybe book the services at the same time. So this kind of a website wherein we are talking about our offering, that is called the business website. Now the business website should contain everything about your business. It should talk about your offering, it should talk about your expertise, it should talk about your product and services. It should be able to give the customer to purchase the product at the same time. If the product value is something like which is variable depending on the customer size, depending on the customer's requirement, then of course a functionality should be there where the customer can connect with you. Maybe a chat box should be there, maybe the contact form should be there. So it should look nice, it should be functional website, and the major purpose of the website is to collect the user data at the same time. Yes, whenever somebody comes on your website, you make sure that you are collecting the data in one or the other way. अगर आपकी वेबसाइट पर कोई व्यक्ति आता है, विजिट करता है, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जानता है और चला जाता है, तो nobody knows कि उसके बाद क्या हुआ। बट अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ ऑफरिंग डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं जिसके लिए कस्टमर इंटरेस्टेड हो सकता है,
तो वहाँ पर वो कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन देकर जाएगा एंड देन लेटर ऑन यू कैन कनेक्ट विद दैट कस्टमर. सो मेक श्योर कि आपकी जो बिजनेस वेबसाइट है दैट शुड बी फंक्शनल, दैट शुड बी हैविंग ऑल द लिंक्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट शुड बी a way to collect the lead of the customer. Maybe you can offer something for free, maybe you can give something to download for free, maybe something you can give a preview service, maybe you can offer some kind of a sample product. कुछ भी हो सकता है, but that should be there so that user can come on your website and connect with you at the same time by giving you the details. Right, so this is about the business website, but what kind of other websites which we know in the market exist? So if I simply divide them, they are the micro websites, they are the landing pages or the lead magnets, they are the e-commerce websites. So this is what I was talking about in brief, that if you have a website which is talking about a product or the product specially, so then you have to have an e-commerce website. That means that the functionality is there. What is the landing page and the lead magnet? Yes, now this is very important to understand. Usually क्या होता है कि जब भी हमारी वेबसाइट पर कोई व्यक्ति आता है तो मैंने जो नोटिस किया है कि majority of the websites are designed or built in a way that it seems like a brochure of the business. Website is not a brochure of your business. It should be a person who is talking about your business to that prospect. जैसे एक सेल्स पर्सन होता है ना, तो वो सेल्स पर्सन का रिप्लेसमेंट है आपकी वेबसाइट. सो द सेल्स पर्सन शुड बी doing the certain things with the client, so वो सब चीज़ें आपके वेबसाइट पर होनी चाहिए. Now the landing page is something which is designed to offer or get registration done. Let's say if you are a service provider, let's say you are the trainer and you want to offer a certain kind of a training on a certain day and you want the registrations from the people who are interested into your topic. So उसके लिए कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर आके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को देखे ज़रूरी नहीं है. You are gonna launch a training for a specific subject, specific topic. तो उसके लिए आप अपने कंज्यूमर को ना वेबसाइट पर ना ड्राइव कीजिए अपनी मार्केटिंग के थ्रू. अपने कंज्यूमर्स को आप लैंडिंग पेज पर लेकर जाइए. फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में. सो आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन डिफरेंट फील्ड्स. वन इज़ अबाउट फेसबुक, वन इज़ अबाउट गूगल, वन इज़ अबाउट लिंक्डइन, वन इज़ अबाउट यूट्यूब. सो इफ आई एम रनिंग a specific kind of a course which is only about, let's say, YouTube marketing, so I'll be making a landing page which is gonna talk about YouTube marketing only. So जब कंज्यूमर वहाँ पर आएगा तो वो पढ़ पाएगा कि मैं क्या अपने कोर्स में ऑफर करने वाला हूँ, मेरे कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, मेरे कोर्स की फ़ी क्या है, मेरे कोर्स को अगर किसी ने पहले से लिया हुआ है तो उसकी टेस्टिमनी वहाँ पर होगी, मेरे कोर्स को परचेज करने का रजिस्ट्रेशन लिंक वहाँ पर होगा, पेमेंट गेटवे वहाँ पर इनबिल्ट होगा. सो द लैंडिंग पेज इज स्पेसिफिक to the product or the service which you are going to offer to the client. It is not about everything about your business. So this is very important to understand. So landing page has to be very specific, very to the point and engaging at the same time. नाउ यूजली पीपल मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी जहाँ पर कि हम कंज्यूमर को चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर आए, तो ना कि हम उसको एक लैंडिंग पेज पर भेज रहे हैं अपनी सेल्स को या परचेज रजिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि हम उसे अपनी वेबसाइट पर लेके आ रहे हैं. वेबसाइट पर क्या होता है, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट माई कंपनी, कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, वहाँ पर मेरे कुछ डिज़ाइंस होंगे, इफ़ आई एम ए डिज़ाइनर वहाँ पे मेरे कोर्स की डिटेल्स होंगी अगर वहाँ पे कुछ कोर्स रन होंगे तो, बट इट वुड नॉट बी अ स्पेसिफिक थिंग. सो अगर आप अपने कस्टमर्स को एक स्पेसिफिक ऑफरिंग देना चाहते हैं, सो दैट शुड बी ऑलवेज थ्रू द लैंडिंग पेज और द लीड मैग्नेट पेज. दिस इज अगेन अ लैंडिंग पेज बट नॉट थ्रू द मेन वेबसाइट. दिस इज द डिफरेंस. सो माइक्रो वेबसाइट इज समथिंग विच आई एम गोना टॉक अबाउट नाउ. व्हाट इज द माइक्रो वेबसाइट? यूजली आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च होते हैं तो कंपनी उस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन के लिए एक पेज डिज़ाइन करते हैं एंड दैट पेज इज़ टॉकिंग ओनली अबाउट दैट पर्टिकुलर फ़ोन. They are not talking about all the other models which are there in the company, but only for that particular model, company has designed one single page, or maybe a 2-page, or maybe a 3-page. This small website is going to talk about one product only. So that kind of website is called micro website. छोटी सी वेबसाइट होगी जिसमें उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी. If you want to connect more with the company, you have the options there, and then you can connect with the company to get the more details. So now you know that a business website can be divided into different categories, different segments. मेरे पास एक माइक्रो वेबसाइट हो सकती है इफ़ आई एम लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट. मेरे पास एक लैंडिंग पेज हो सकता है इफ़ आई एम गोना गेट रजिस्ट्रेशंस ऑफ पीपल. अ लीड मैग्नेट कुड बी डन. मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है इफ़ आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. सो
Now you decide as a business owner what kind of a site I need. Do not accept the kind of a website which is being offered to you by a freelancer or maybe a company of digital marketing, but you insist or you kind of discuss with them what exactly my business needs are and what I'm gonna get. If your business needs are like such that you need to have a website, if you're starting a business, you also need a landing page and a lead magnet, you also need the e-commerce functionality. So get everything in one deal. Do not think that I'll be having a website today, basic a business or maybe a brochure kind of a website. Then tomorrow I'll be going for the landing page. Then the day after I'll be talking about the e-commerce website. Just discuss in detail in the initial phase, because once you are launched, people will be talking about you, people will be searching about you, people will be coming to your pages to know more about you. So at that time, your offerings you should be offering in a right way through the website. You should be able to collect the data of the consumers at the same time. You should be able to connect with the consumers at the same time. If you want to give some kind of a sample service or the sample product, you should be able to give them through the website only. There should be no two-way communication कि आज आपकी वेबसाइट पर आया, फिर कॉल कर रहा है, फिर उसके बाद 3 दिन तक आप रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा. It should be immediate on the site. The site is your salesperson. Now, if I talk about the websites, ठीक है, कोई भी कंपनी आपके लिए वेबसाइट बना देगी, बट यू शुड नो कि कौन कौन से मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू वेबसाइट बनाई जाती है. सो लेट्स टॉक अबाउट देम ऑल्सो. There are two major kind of platforms. One is a code-based platforms, and another is a CMS-based platform. Now, code is like wherein somebody is writing code for your website. They have to do the programming for your website. They have to write a lot of code, and then your website will be coming into existence. And the other would be the CMS, which is content management system based websites. So if I talk about the code website, you know that पुराने ज़माने में या अभी भी कहीं कहीं जगहों पर HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह वेबसाइट में यूज़ की जाती हैं, उनका अलग पर्पस है. बट मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स बीइंग नाउ डेवलप्ड थ्रू दीज डिफरेंट टूल्स. The most used tool is WordPress, then we have Blogger, then we have Joomla, then we have Shopify for e-commerce, we have drag and drop page builders. I'll be adding some more, like the way we have the Shopify for e-commerce. We also have WooCommerce for e-commerce. This is also a platform which works in the conjunction with WordPress. And then we have some drag and drop page builders. If I simply give them the name, they are very well known, which is like Elementor, which is like Divi, Wix, GoDaddy website builder, Zyro from Hostinger. So there are many platforms which are available to make a website. Now you have to select the right platform, which is a requirement for your business, and then you select कि मेरे platform और मेरे website या मेरे business के लिए कौन सा platform सही रहेगा. So if I talk about a bit more about the CMS based options, then the WordPress is the one which is being utilized by many programmers, many developers, many companies, many freelancers, because that is pretty easy to use and it gives you a lot of options at the same time. In the conjunction with WordPress, you can utilize these all drag and drop page builders, which is Elementor, Divi, Wix, and other ones as well. So what is WordPress actually? WordPress is a platform जिसको आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो बेसिक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको किसी तरह की कोडिंग नहीं करनी पड़ती और वो आपके लिए रेडी हो जाता है. उस पर आप अपनी वेबसाइट की बेसिक लैंडिंग पेजेस या फिर बेसिक ब्रोशर पेजेस, बेसिक लीड मैग्नेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पेज बिल्डर्स. मेजॉरिटी में लोग यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर और वर्डप्रेस और डिवी. Wix, GoDaddy वेबसाइट बिल्डर और Zyro from Hostinger आई डोंट रिकमेंड बिकॉज मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग या इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लगा और काम करने में थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ. सो आई पर्सनली हैव यूज्ड Elementor एंड Divi. दे आर गुड एंड इफ आई चूज बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो Elementor इज़ द बेस्ट. सो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स का काम करने का तरीका बहुत सिंपल रहता है. अगर आपने कभी भी पावर पॉइंट में काम किया हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया हो तो ये प्लेटफॉर्म कुछ इसी तरह से हैं जिसमें आप सिंपल टाइप कीजिए, पावर पॉइंट की जैसे आप पिक्चर्स को इंपोर्ट कीजिए, उनका साइज़ वगैरह डिज़ाइन वगैरह सेट कीजिए एंड देन योर साइट इज़ रेडी. सो प्रीटी मच ईजी इफ़ यू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट हाउ द एलिमेंट्स एक्चुअली वर्क. पिक्चर कैसे काम करती है, टेक्स्ट कैसे काम करता है, कैसे उनका अलाइनमेंट किया जाता है, कैसे उनको नीचे या ऊपर किया जा सकता है. इफ़ यू नो दिस मच देन यू कैन लर्न Elementor विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस ऑफ कोर्स. बट
if you are going for the HTML, PHP, JavaScript or Python or other languages to design the website, then it will be a kind of a difficult task for you. So being a business owner, you always insist the person who is going to give you a solution that your website should be in the WordPress or along with the Elementor. Why? Because let's see what happens. Today you're getting a website from a freelancer, from a company, and let's say after 3 years that person is no more connected with you. That person is no more working with you. So if you have a website which is built in WordPress or Elementor, there are plenty of people, they know about these tools. So what they will do, or what you can do, you can simply hand over the website to some other developer, some other company, and without wasting their time, they can work on your website because they know how WordPress works, how Elementor works. So this is kind of an open thing for everybody, because when we talk about the languages, or when we talk about the programming languages, every programmer programs in a different way. If you are the programmer, if I am the programmer, मैं कुछ अलग तरह से प्रोग्राम करूँगा, आप उसी चीज़ को किसी और तरह से प्रोग्राम करेंगे to get the same kind of a result. And when third person comes to the picture, he would not be able to understand कि मैंने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है. But these platforms, which is WordPress and Elementor, if I combine both of them to work together with a good conjunction for your website, a lot of people know about how these platforms actually work, and they will be able to give you the solution if you face anything after 2-3 years when the person or the company is not there in the market who served you before. Now, if I talk about the mistakes to avoid, there are many mistakes people do, which I have discussed in the previous points, but majority is like, when we are making a website, we do not think about the color scheme. We do not think about the brand value. We do not think about the logos. We do not think about the fonts. We do not think about the pictures. होता क्या है कि अगर मेरे पास एक लोगो है भी, तो मैंने अपनी एक सिंपल सा लोगो बनाया था. I'm talking about the person who is moving from offline world to the online world for the first time. So जब आप online world में आते हैं तो different kind of a pictures, different kind of a vision हमें चाहिए होता है, किस तरह के मार्केट में चीज़ें चल रही हैं. अगर मैं एक ऐसा लोगो बना लेता हूँ जो आज से 10 साल पहले चल रहा था और आज भी चल रहा है मेरी ऑफलाइन वर्ल्ड में, but that might not suit into the online world. In the online world, I need a kind of a clean logos, very minimalistic logos, right? So this kind of a work I have to again do for my business. कलर स्कीम की जहाँ तक बात की जाती है, ऑफलाइन वर्ल्ड में जब मैं था, बिजनेस रन कर रहा था, तो मेरे पास मेरी जो स्टेशनरीज थी उनका कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं था, कोई कोड नहीं था. Sometimes it was red, sometimes it was maroon, sometimes it was pink, sometimes it was white. So मेरा काम चल रहा था. But when I come to the online medium, मेरे को एक कलर थीम रखकर चलना होगा, मेरे को एक ब्रांड वैल्यू बनाना होगा, so that any time a consumer is coming to my website or going to the other properties like Facebook or Instagram or LinkedIn or wherever it is, they get the kind of a streamlined representation of my brand. You see, Facebook is having a different color, LinkedIn is having a different color, Instagram is having a different brand value, Google is having a different kind of logo. So they are consistent with the kind of colors they use throughout the years, right? So this is the kind of a thing you have to understand in the very beginning when you're designing your website, that you have to have the right kind of a color coding for your brand, color coding for your website, color coding for your stationery, color coding for your whatever it is, for your business representations. Fonts are very important. Usually क्या होता है कि हम लोग वेबसाइट बनवाने के लिए किसी छोटी मोटी कंपनी को हायर करते हैं, अगर करते हैं तो they don't have the psyche to understand, to judge what kind of a font will match with the kind of a business I am serving. If I am serving a client who is into the food industry, I need a different kind of a font. If I'm serving a client into the training industry, I need a different kind of font. If I'm serving a client into the astrology or maybe the healing sector, then I need a different kind of a font. So yes, the person who is giving you services, they should be able to grasp that, and if they don't, you should be able to guess it, and then you can pass on the message to those guys. And for that, you have to understand what kind of font is leading in your industry. I give you an example like Apple. Apple have a different kind of a taste. When you go to their website is pretty much clean website. Everything is very much organized. When you are going to read something, you can read without any problem. The color combination, the font combination is so clean, so advanced that user comes to the site and that I simply fall in love with that kind of a site, the kind of a design they do. So this is kind of a thing you have to think when you are giving the project for your website or any kind of a graphics for your
online mediums, be it a social media platform, YouTube, or anything else. So this is very, very important. So pictures, that is very, very important nowadays, because what happens? In the case of pictures, यूजुअली बिजनेस ओनर्स के पास अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज की पिक्चर्स नहीं होती हैं, और वो इंटरनेट से फ्री में पिक्चर्स डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड दीज थिंग. अवॉइड करने के बाद क्या किया जाए? आप अगर कोशिश हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स की ही पिक्चर्स को क्लिक कीजिए, अपने लिए अपने अलग से एक फ़ोटो शूट कीजिए. बट अगर आपको एक जेनरिक पिक्चर चाहिए तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर्स प्रोवाइड करवाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स प्रोवाइड करवाती हैं ऑन अ कॉस्ट. सो जहाँ तक हो सके आप हाई रेजोल्यूशन क्लीन इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर यूज़ कीजिए. कई बार क्या होता है ना, यूज़र्स यूज़ कर लेते हैं कुछ ऐसी इमेजेस जिनका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, लेकिन हमारे पेज पर स्पेस इतना बड़ा है, तो जब वो स्पेस को कंज्यूम करती हैं तो ऑलरेडी वो पिक्सलेट हो जाती हैं, और आने वाले विजिटर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बहुत अच्छी एक इमेज नहीं मिलती, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस नहीं मिलता, and they simply do not want to come to your site again and again. So my simple suggestion is, whenever you are going to use the pictures, you always go and search on some websites which are going to give you the free pictures with high resolution. So Pixabay is one, Pexels is two. I'll mention those websites in the comments in the description section, where you can have a look on those websites. So this is the kind of a mota about this website wala section. So the whole reason to explain everything about the website is, whenever you are deciding for a website, you please discuss everything in detail with the programmer or the company or the freelancers who are going to give you the service, because all these things which I have discussed are very, very important. In the coming sections, I'll be talking about the domain and hosting, communication, how to reach more and more people organically or maybe with the online promotion. Then I'll be talking about the email marketing and payments as well. Hey, thank you very much. अगर आप अभी भी इस कोर्स में बने हुए हैं तो first of all thank you very much for the time you have given to me, and I really appreciate that you have invested your time to get knowledge for your business, to get knowledge about your digital ecosystem. But now what next? What about these topics which I'm going to discuss in the future? Well, for these topics to be covered, you have to enroll into a course, and there's a surprise waiting for you. So if you want to know more about the course, please click on the link which is there in the description section, and from there you'll be landing into a different page, and on that page I have described everything about this course and the surprise which I've just spoke about. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ऐसे वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट यू कैन ग्रो मोर एंड मोर ऑनलाइन एंड गेट मोर एंड मोर कंज्यूमर्स कनेक्टेड विद यू फॉर मोर एंड मोर सेल्स. सो मिलते हैं ब्रेक के बाद. टिल देन, हैव अ नाइस डे अहेड. Bye-bye.